Okay, chalo. So gestation period, you know what is the gestation period? Pregnancy is through 266 days, 38 weeks. Ma'am, now I can't see the screen. I know. No, now I can. Are? Okay. But I don't know what is happening. Okay, no problem. चलो. Function of placenta. 38 ये पहले भी हमने लिखा था ना, है ना? 38 weeks or 9 months. Okay. Functions of placenta क्या क्या करेगा देखो. So this is umbilical cord which will be attached to the placenta. यहाँ पे placenta रहेगा. So placenta is the only organ which is made up of two different individuals. है ना? Mother and baby का मिलके, that is the only organ in entire body, and that privilege is only for mothers. Okay, देखो क्या क्या करता है. Supply of oxygen, and this become again important theory question of functions of placenta. Supply of oxygen and nutrient to the embryo, removal of CO2 and excretory material produced by the embryo. Ma'am, are you writing anything on the screen? No, I'm not writing. I'm just reading. From the screen, ma'am? No. Yeah. Ma'am, I can't see the written part on the screen. No, I'm not writing anything. No, ma'am, like there's nothing. Shall I have written something? Can you read? No, there is nothing there only. It's blank. Okay. Wait, let me again try sharing the screen. Now I can see, yes. काहीतरी गडबड होती. Wait. Now can you see? Yeah, I can. I have written what it is. Yes, ma'am, I can see supply of oxygen and nutrients. No, I'm writing something. Can you see that? Yes, ma'am. You wrote Your my name. name. Okay, Yes. sure. Okay, so removal of carbon dioxide and excretory material. Okay, then next, the placenta is connected to embryo through an umbilical cord, which helps in transport of substances. कसं जाणार आहे? So it is via this umbilical cord. Okay, it is forming between the connection between the fetus and the placenta is the umbilical cord. Corpus luteum till 3 months. Already we did this. Till 3 months. Corpus luteum will provide progesterone. After 3 months, placenta is developed. So 4th month onward, progesterone will be secreted by placenta. Right? This you know already, isn't it? Yes. Progesterone is essential for maintenance of pregnancy, and hence progesterone is a pregnancy hormone. No? Development of placenta is by estrogen, and maintenance of placenta is by progesterone. Okay, so SCG, you can make this placenta secreting SCG. कहाँ जाएगा वो anterior pituitary में? It will produce LH. LH will prevent menstruation and further ovulation. अभी वो दिस LH and that LH तो ओव्यूलेशन के लिए हेल्प कर रहा था. फिर अभी तो दिस क्वेश्चन शुड कम इन योर माइंड. ये कैसे हो गया अभी?
वी डिड ना इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, एलएच सर्ज होता है तो क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है. अभी तो यहाँ पे तो एलएच उल्टा कर रहा है काम. एग्जैक्टली, सो सर्ज. ओके, चलो. Ma'am, one See. minute. Can you go back? 1 minute on. Okay, done. Okay, so HCG is secreted, and nowadays you get this strip available in the market. You just put a drop of urine over here, immediately you will get a result. So at home you can check whether the female is pregnant or not. If you get these two strip, two red line, then she is pregnant. If only one, not second, only control पे अगर आता है, so this one strip is for control, other is for test. तो टेस्ट पे आना जरूरी है. अगर इधर नहीं आया, सिर्फ इधर ही आया, तो then she is not pregnant. Okay. Okay, HPL is also called as a placental lactogen. No? ठीक है, ये हमने कर लिया ऑलरेडी. सो वो जो इसमें दिया एनसीईआरटी में वही ध्यान में रखो. ओके, अभी सिर्फ आई टेल यू अबाउट दिस एम्बिलिकल कॉर्ड. ये कट करते हैं व्हेन द बेबी इज डिलीवर्ड ना, सो ये एम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं विद सीजर, और वहां पे हाँ क्लैंप लगा देते हैं. जब कट करते हैं, द ब्लड व्हेन इट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस आफ्टर कटिंग दिस एम्बिलिकल कॉर्ड, दैट इज हैविंग द ग्रेट नंबर ऑफ स्टेम सेल्स. और ये आजकल प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टेम सेल प्रिजर्व करके रखते हैं. खूप पैसा आहे, पण माहिती नाही ते किती सक्सेसफुल आहे, कुठली एजन्सी येते आणि ते स्टेम सेल बँकिंग सुरू करतात. So again on page number 37 given in your HSC that India's first government run cord blood bank in Kolkata established in 2001. So here त्याचे नाही, त्याचे व्हायल्स बनवतात आणि ते प्रिझर्व करून ठेवतात. मग त्या प्रिझर्विंगची कॉस्ट जेव्हा जन्म होतो तेव्हा म्हणजे 2003-4 मध्ये द कॉस्ट वॉज लाइक अराउंड 1 लाख रुपीज. अभी पता नहीं मुझे रिसेंट क्या है उसका. तो 1 लाख रुपीज में दे विल प्रिजर्व फॉर नेक्स्ट 18 to 20 ईयर्स. तब तक अगर बेबी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो दैट ब्लड इज हैविंग द कैपेसिटी टू रीजनरेट द एंटायर ऑर्गन. दैट ब्लड मतलब अभी सपोजिंग कि बेबी को से 15 ईयर्स में कुछ हो गया, तो वो ब्लड से पूरा ऑर्गन रीजनरेट कर सकते हैं. लेकिन अभी लोगों को पता नहीं होता है, द मार्केटिंग इज दैट वे. फिर वो ऑर्गन रीजनरेट का कॉस्ट, उसका तो ह्यूज कॉस्टिंग इज इन्वॉल्व. रीजन ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स. हाँ, तो सपोजिंग ट्रांसप्लांटेशन है, अभी मैं किसी को ट्रांसप्लांट कर रही हूँ तो बॉडी रिजेक्ट करेगी, तो ये तो रिजेक्ट नहीं करेगी, ये खुद के ब्लड का है. बट अभी ये मतलब अभी ठीक है 20 ईयर्स तक प्रिजर्व करोगे, 20 ईयर्स के बाद किधर जाना है, ऑर्गन बनाने के लिए किधर जाना है, सो दैट इज नॉट येट श्योर इन इंडिया. और काफी लोग इसका इतना जम के मार्केटिंग करते हैं, एंड इट्स अ मनी अर्निंग गुड बिजनेस विदाउट एनी आउटपुट. So one has to ask all this question, क्या होने वाला है इसका फ्यूचर. ऑल राइट, सो बोलो चलो. कोरियोलेंट की किया था क्या? चलो अभी आई विल एक्सप्लेन हियर ओनली द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. गिव हेडिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. So which are the extra embryonic membrane the baby is having? Yes, 4. कौन से?
Yes, it is amnion, chorion, yolk sac, and allantois. Apna allantois is getting fused with chorion and hence placenta become chorioallantois. Okay, chorioallantois. So देखो अभी I'll draw here extraembryonic membrane. So this is say the developing baby. Okay. Now this baby is having the membrane. I'll use different colors. So this is say yolk sac. Okay. This is a allantois, or you can say okay yolk sac allantois. Uske baad there is a complete amniotic cavity is surrounding to that baby. Yes, you have to draw this. Make you draw for it. है ना? And surrounding to this there is a chorionic. ना चार draw करने ना अपने को. Which color I will use? Yes, this color. Okay. So this is a chorion. This is a yolk sac. This is a allantois. And this is a amniotic cavity. Okay, now you know everything. Chorion. And this forms a placenta. Yolk sac, if you remember, हम लोगों ने बोला था yolk sac में. It is the first extraembryonic membrane from where the fetal RBCs are produced. Fetal RBCs are produced from here. Right? Fetal RBCs from yolk sac. Allantois तो बाद में फ्यूज हो जाएगा. है ना? और यहां से जो निकलेगा umbilical cord. So this particular region, ये यहां से umbilical cord वाला region. यहाँ से fetus will also produce the arteries and veins, fetal arteries and veins, and it will be embedded into the chorionic villi. So this part will become the umbilical cord. समझा नहीं समझा? Here there will be the fluid. So that fluid is a and it will contain the cells. Amniotic fluid. So this amniotic fluid is to diagnose the sex and all the genetic disorder. So now in the US or developed country, they do all the analysis of this amniotic fluid for the genetic disorder. Not very popular in India. Okay. हाँ
नाउ देखो, बना लिया, पहले बना लो फिर मैं बोलती हूँ। लिखा? एमनियन हाँ कहाँ मैम। से बना? डेवलप फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट, करेक्ट? Majorly developed from trophoblast. Yolk sac also. Yolk sac is very well developed in trophoblast से काफी चीजें बनी है ना? Yolk sac, it is the first site where the RBCs are produced. So first site of RBC production from yolk sac. It is very poorly developed in humans. क्यों? क्योंकि अपना प्लेसेंटा है. And but it is well developed in birds and reptiles. Okay. Yolk sac is storing the food. So yolk sac क्या करता है? Yolk sac is storing the food. It store the food and hence it is known as extraembryonic gut. It is known as extraembryonic gut. What is the benefit of this extraembryonic membrane? Can someone tell me? For protection. Embryo को protect करना जरूरी है ना? खुद का खुद तो कुछ नहीं कर रहा है अभी. So to protect. So yolk sac is storing the food. Allantois जो है, again this yolk sac and allantois is poorly developed in us, but well developed in birds and reptiles. So this allantois is known as extraembryonic kidney. Gut. Store food मतलब it is extraembryonic. EE is a extraembryonic gut. Amniotic cavity और amniotic membrane क्या करता है? Amniotic उसमें fluid भरा होता है. During the parturition, first there is a breakdown of this amniotic cavity and huge amount of fluid is released out of the vagina. That is indicating the contractions. Yeah. And so this amniotic is acting as a shock absorber and it provides the aquatic medium for the developing embryo. Shock absorber. And aquatic medium for the, मतलब वो बेबी ड्राई नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? So aquatic medium for developing embryo. And अभी बच गया कौन? कोरियन. तो कोरियन बाहर, so the mother has the मतलब ठीक. Chorion is a extra embryonic lungs and also participate in placenta formation. So these all are the extra embryonic membrane which is important for the developing fetus. Placenta formation. So आपण म्हटलं ना chorioallantoic placenta. Clear? Yeah. So all these are the extra embryonic membrane of the fetus. Parturition, lactation, development, stages in parturition.
So all these are the extraembryonic membrane. Allantois, chorion, yolk sac and amnion. Clear? जो मैंने अपनी तरह से डायग्रामेटिक एक्सप्लेन किया. All these are the fetal membrane. So how many fetal membrane are important? 4. This membrane helps overall for all these functions. Desiccation, mechanical shock, exchange of gases, absorption of nutrient, and elimination of waste. Amniotes भी होते हैं, amniotic and amniotes. There is a difference. These amniotes and amniotic cavity. Amniotes are called as a reptile and birds. Amnion and amniotes. Are you getting this? Shall I change it? ठीक है, अभी वही सब. अभी कल पार्चुरेशन, लैक्टेशन एंड ये क्या फर्स्ट ट्रायमिस्टर 9 महिन्यात काय काय झालं, कुठला पार्ट कधी डेव्हलप झाला, बोलो. चलो सिंपल है ना. Amnion. अभी ये स्प्लैक्नोप्यूर एंड सोमैटोप्यूर मैंने नहीं बोला पर्पसली, क्योंकि ये किधर भी मेंशन नहीं किया है, तो अननेसेसरी आई डोंट वांट टू बर्डन यू. ओके. Splachnopureik is yolk sac and allantois, that is the extraembryonic mesoderm. तो जो एम्ब्रियो का कोई भी टिश्यू नहीं बनाएगा, कौन? स्प्लैक्नो. जिसको चाहिए वो समझ लो, जिसको नहीं चाहिए वो छोड़ दो. दिस इज द extraembryonic mesoderm forming the yolk sac and allantois. Yolk sac and allantois. Okay. And is not forming any tissue of embryo. Somatopleure is a chorion and amnion. Chorion and amnion. इसमें इनर मेसोडर्म, आउटर एंडोडर्म, ऐसे काफी कुछ कुछ है. जिसको ध्यान में रखना है रखो, छोड़ देना है बेटर छोड़ दो. Any doubt up to this? Tomorrow I guess I'll complete this topic. Okay, ma'am. So are you joining tomorrow offline, Gargi? No, ma'am. Tomorrow I will reach around this 3:30-ish. I don't know. If I come in time, I will join offline. But if not, I will do online only. ठीक है. Okay. चलो कुछ क्वेश्चंस करो.